Hello everyone, I am Vijay Kapkoti, your yoga teacher from Ardent Progressive School, Haldwani, Lamachar. Students, I hope you all are well, fit and fine at your homes and doing well. Today, we will learn in this yoga video about Pawan Muktasan. Pawan Muktasan with one leg and then Pawan Muktasan with both the legs. So, you will do this asanas with me. In the end, we will do Jhulna Ludhakna asana. See what is that? You will enjoy that. So let us start. Dear students, first I will explain in Hindi. After that I will explain in English. पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे. उसके लिए ज़मीन में लेट जाना है. ज़मीन में लेटने के बाद एक पाँव को हम फोल्ड करेंगे. घुटने को छाती के निकट को लाएंगे. हाथ को इंटरलॉक करके नीज के पास रखेंगे. सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे और नोज़ को घुटने से टच करेंगे और कुछ देर इसी तरह रहेंगे जब तक रह सके. उसके बाद सांस लेते हुए पीछे को आ जाएंगे. अब हम इसी को दूसरे पाँव से करेंगे. हमने दूसरा पाँव छाती के पास लाया, हाथ को इंटरलॉक करके घुटने के पास रखा, मुंह को आगे ले गए सांस छोड़ते हुए, नोज़ को नीज से टच किया. सांस बाहर है, सांस बाहर रोक के रखा हुआ है. फिर थोड़ी देर बाद सांस लेते हुए पीछे आ गए और पाँव को सीधा कर लिया. See it again. We are folding one leg, interlocking our hands and keeping it near the knees. While breathing out, we bring our head forward and touch the nose to the knee and remain in this position 10 to 30 seconds. After that, come back and straighten the leg. This is how we do Ek Paad Pawan Muktasana. In Sanskrit, Eka means one, Pada means leg. So, this is Pavan Muktasana with one leg. After doing this Ek Paad Pavan Muktasana, we will do Dvipad Pavan Muktasana or the Pavan Muktasan. Benefits are similar in Ek Paad Pavan Muktasana and Pavan Muktasana. This is effective exercise to cure constipation and digestive disorders. It cures indigestions and promotes digestive functions. And it also cures the gastric troubles. It helps in curing almost all the abdominal diseases. इस आसना को कर लेने के बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे. उसमें हम दोनों पाँवों को फोल्ड करेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक पाँव फोल्ड कर रहे हैं. यही अंतर है एक पाद पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन में. We can do this एक पाद पवन मुक्तासना 3 to 5 times from both the sides, and after doing this asana we can do relaxation in Savasana. For relaxing in Savasana, we will keep gap between the legs. The gap will be of 1 foot to 1.5 feet, and our hands will be on the sides. Palms will be towards the sky. Eyes will be closed, and we will relax the whole body. We will take normal and relaxed breathing. अब हम पवन मुक्तासन करेंगे. पहले सीधा लेटेंगे, फिर दोनों पाँव को फोल्ड करके छाती के पास लाएंगे. हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के पास रखेंगे. सांस को छोड़ते हुए सर को आगे को लाते हुए नाक को नीज पे लगाएंगे. हमें इस पोजीशन में 10 से लेके 30 सेकंड तक रुकना है, या हम जितनी देर तक सांस को बाहर रोक सकें बस उतनी ही देर रुकें. ज़बरदस्ती इसमें नहीं रुकना है. थोड़ी देर बाद जब आपका नीचे आने का मन करे तो धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को नीचे लाएंगे
और पाँव को सीधा कर लेंगे। Now we will do it again. Lie down and join your legs. Fold your legs. Interlock your hands. Bring it near the knees and your knees towards the chest. Bring the head forward. Exhale out. Breathe out and touch your nose to the knees and remain in this position as much you can or for 10 to 30 seconds. After completing the asana, you will open the asana. First, you will bring head down and then straighten your legs. We can do Pawan Muktasana 3 to 5 times easily or more according to your need. Before repeating the asana, you can relax and take some breaths because during the asana you hold the breath out, so your breath need relaxation. Pawan Muktasana has got its name because it removes the gas problem from your stomach. पवन मुक्तासना का नाम पवन मुक्तासना इसलिए पड़ा है क्योंकि पेट की गैस को, पेट की वायु को, पेट की हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। पवन का मीनिंग होता है हवा और मुक्त का मीनिंग होता है फ्री। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द फैट। आफ्टर कंप्लीटिंग द Pawan Muktasana, you can relax in Savasana. Savasana removes the tiredness, it gives the relaxation. Though we use Savasana for relaxation, but it is also a very important asana. And now we will do the Jhulna Ludhakna asana. For doing the Jhulna Ludhakna asana, first you will fold your legs, interlock the fingers and hold the legs from just below the knees and roll your body backward and forward. You can do it easily 5 to 10 times. You are massaging your back, hips and buttocks. Breathe in while you roll back and breathe out when you come forward. Then from the sideways we will do Jhulna Ludhakna asana. You will come from one side and go to the other side. While coming in the middle, you will breathe in, and while going inside, you breathe out. So there are 2 steps in Jhulna Ludhakna asana. First we rolled backward and forward, then we rolled sideways. After the Jhulna Ludhakna asana, relax a while and get up. We have completed 3 asanas, Ek Paat Pawan Muktasan, Pawan Muktasan and Jhulna Ludhakna asana. I hope you will do these asanas at home. This yoga session is over. Goodbye and stay healthy, stay blessed.